Okay, so this is the last topic, the types of motion. Now when you know what is motion, whenever a body is moving, you say it is in motion. So there are different types of motion also. अब आप sometimes a body is moving in a straight direction, sometimes a body is moving in a circular path. So we have categorized them in three types. The first one is your, you may have observed the motion of a vehicles on a road, march past of soldiers or of a falling stone. तीनों कंडीशन में look at one thing. Vehicle on a straight road, एकदम सीधी गाड़ी चल रही है. Second is march past of a soldier. You must have seen they all move in a straight line. Third is falling of a stone. Whenever you are dropping a stone from the terrace or from somewhere else, ऊपर से आप फेंकोगे तो वो एकदम सीधा जाएगा, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा. It would go in the straight direction. So what is happening? Everything is moving in a straight line. So whenever any object goes in a straight line, it is said to be in rectilinear motion. It is said to be in rectilinear motion. Okay, now the second one is your, sometimes what happen, what they are saying, take a stone, tie a thread to it and whirl it. आपको एक stone लेना, उसमें thread लगाना है and whirl it. What is happening? The stone is moving along a circular path. जो stone का direction है वो कैसा हो रहा है, गोल 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 गोल. जैसे भाई sun के around you know that earth is moving. ठीक है, ऐसे circular path में. And they have shown you in figure this, your cow is moving एंड द बकेट्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ऐसे डायरेक्शन ऑफ व्हील जो होता है, मोशन ऑफ व्हील होता है, गोल 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 गोल, ऐसे आपकी जो पुलीज हैं वो इसी तरीके से मूव कर रही हैं. सिमिलरली दिस योर cock which is sitting on this toy, it is also moving in circular direction. The blades of your fan is also moving in round direction on a circular path. So this type of motion is known as circular motion. Whenever any object is moving in a circular path, then that is known as circular motion. Now the third one is, sometimes what happen, in some cases an object repeats its motion after some time. ऑब्जेक्ट क्या करता है, थोड़ी देर बाद अपने मोशन को रिपीट करता है, द सेम मोशन इट रिपीट्स, देन दैट इज नोन एज पीरियोडिक मोशन. इट इज सीन इन द योर पेंडुलम. ठीक है. नाउ व्हाट इज योर पेंडुलम, व्हाट दे आर टेलिंग यू, वही वाला आपको स्टोन लेना है जिसने आपको जिसको आपने थ्रेड से बांधा था. नाउ इंस्टेड ऑफ व्हर्लिंग इट, व्हाट यू हैव टू डू, सिंपली ड्रॉप इट डाउन एंड मूव लाइक दिस. So what will happen, the direction of the motion of stone will be this way, as you must have seen in a clock with a pendulum. Look at this figure B here. So this is your pendulum. ये जो नीचे है ये डिंग डिंग डिंग, it would move in left direction and it would move in राइट डायरेक्शन. ये वाला जो मोशन होता है, पहले लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा फिर राइट जाएगा. दिस इज नोन एज द टू एंड फ्रो मोशन. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, दिस टाइप ऑफ मोशन, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग, इट इज रिपीटिंग इट्स मोशन. अभी यहाँ था फिर यहाँ आया, फिर दोबारा यहीं आ गया, फिर दोबारा यहीं आ गया. द सेम मोशन इज गेटिंग रिपीटेड. सो दिस इज नोन एज योर पीरियोडिक मोशन. Similarly, they have given you another example on a swing. What happens on a swing? You're pushing it again and it comes back, then you're pushing it again, then it comes back. So the same motion is getting repeated. Another is your strings of a guitar. What happens in a guitar? You have to continuously move the strings. तो strings जब आपके move करते हैं एकदम एकदम ऐसे करके vibration में, again this is the motion is getting repeated. It is your periodic motion. इसके अलावा what they are telling you, you must have observed a sewing machine also. So it is, you must have observed that it is on the same position, same location. आपकी sewing machine तो rest पे है, but at any point on its wheel moves in a circular direction and its needle goes continuously up and down. तो आपकी sewing machine में क्या होता है, आपकी sewing machine खुद rest पे है, लेकिन जो उसका wheel है it is in circular motion and the needle is going up and down, up and down, up and down. So it is your पीरियोडिक मोशन. अनदर एग्जाम्पल, एक ही ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, दो मोशन हो रहे हैं. योर बॉल विच इज मूविंग ऑन अ फ्लोर. ठीक है. तो व्हेन योर बॉल इज मूविंग ऑन अ फ्लोर ऑन अ ग्राउंड, व्हाट हैपन्स, द बॉल इज रोलिंग. एक तो वो क्या कर रही है, खुद गोल 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 घूम रही है.
that is your circular motion, and it is also moving in the straight direction. सीधे सीधे जा भी रही है और खुद रोल भी कर रही है. So two types of motion, your circular and your rectilinear motion. Both are seen there. So there are several other examples in which your combination of different motions can be seen, right? So we did many measurement activities and discussed some kinds of motion. We saw that motion is a change in the position of an object with time. So what is motion? Motion is exactly a change in position of an object with टाइम. आप कब बोलोगे मोशन हुआ? जब किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुई. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो भाई, 1 सेकेंड पहले भी आई वाज सिटिंग लाइक दिस, एंड देन आफ्टर 1 सेकेंड ऑल्सो आई एम सिटिंग लाइक दिस. सो देयर इज नो मोशन, आई एम एट रेस्ट. बट इफ़ यू सी माई हैंड्स आर मूविंग एट अ सर्टेन पॉइंट, थोड़ी देर बाद आप देख रहे हो अगेन आई एम मूविंग, मेरी पोजिशन चेंज हो गई है. सो यू कैन से दैट आई एम इन motion. This allows us to know how fast or slow our motion is. The movement of a snail on a ground, a butterfly flitting from flower to flower, river flowing, these are all examples of motion. Even motion is taking place inside your body also. What type of motion? Water is moving. कैसे move कर रहा है? The blood is carrying the food, the blood is carrying the nutrients, the blood is carrying the oxygen. They are in continuous motion. Blood is continuously getting pumped in your body and it is in continuous motion. Therefore there is motion inside your body also, and therefore motion is everywhere around us. So this is the end of your chapter.